हेलो एवरीवन, हियर इज यूर रमन शर्मा और आज का स्पीकिंग बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। उसमें एक स्टूडेंट मेरे पास, आज स्पेशल एक बच्चा मेरे पास आया जिसका नाम है आंचल शर्मा। मैं उसको भी आपको मिलाऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले अंचल मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट थी और इसका स्कोर था, वो रहता था 5 बैंड या 5.5 बैंड। मगर डेफिनेटली आंचल ने प्रैक्टिस की वन एंड द ओनली बेस्ट एप्लीकेशन नेम्ड बेबी कोड, जिसको मैं हर वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि डाउनलोड करो बेबी कोड। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों डाउनलोड करो बेबी कोड। और डेफिनेटली आंचल भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि पहले बेबी कोड का मतलब बेबी कोड से पहले उसकी स्पीकिंग कैसी थी और बाद में उसको कौन कौन से चेंजेस आए। और आज मैं कंडक्ट करूंगा आईएलटीएस का पूरा स्पीकिंग टेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स थी और डेफिनेटली आंचल कितना बैंड स्कोर डिजर्व करती है, ये आप लोग भी बताओगे और मैं भी बताऊंगा। सो काइंडली आंचल, स्पीकिंग शुरू करने से पहले प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो ताकि आपको बहुत लोग वीडियो में देखेंगे और डेफिनेटली आई वांट कि आप उनको बूस्ट करें और अपना रियल एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। जी हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल और आज आप सबके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी स्पीकिंग में, ग्रामर की एंड बहुत सारी। बट जब से मैंने बेबी कोड एप्लीकेशन यूज़ किया है, मैंने अपनी स्पीकिंग बहुत इम्प्रूव कर लिया। और पहले मेरा बैंड जस्ट 5 एंड 5.5 रहता था, बट जब से मैंने बेबी कोड ऐप यूज़ किया एंड आई गॉट 6 एंड 7 बैंड्स इन माई स्पीकिंग। एंड और मैं ये सबको रिकमेंड करती हूँ कि आप सब प्लीज़ इसे यूज़ करें। ये बहुत अच्छा ऐप है और ये सच में आपकी स्पीकिंग को बहुत इम्प्रूव करेगा। थैंक यू वेरी मच और ग्रेट व्यू बाय आंचल। और अब हम देखते हैं कि आंचल का स्पीकिंग किस तरीके का है और डेफिनेटली इट वुड बी वेरी नेचुरल स्पीकिंग। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनिए और जैसे आपको रियल एग्जाम में मिलेगा हम वैसा ट्राई करेंगे परफॉर्म करने का। और कोई भी गलती हो तो डेफिनेटली हाथ जोड़ के मैं पहले भी आपसे माफी मांगता हूं और वीडियो के एंड में भी मैं आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि आप हो मेरे को बनाने वाले और आई लव यू एवरीवन। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज का आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट। So that's okay. Good morning. Good morning, sir. How are you? I'm good. What about you? I'm good. What's your name? Well, my full name is Anshul Sharma. Anchal Sharma. From where are you? I'm from Jalandhar city. Chilandar. Anchal, may I see your ID, please? Yeah, sure, sir. Here it is. Thank you. That sounds good. Anchal, 2003. That's okay. Anchal, are you ready for your IELTS speaking? Yes, sir. Okay, actually we have 3 tasks. Task 1, task 2 and task 3. Okay. It would take 10 to 13 minutes of our IELTS speaking, or I think that it would be a great experience. Don't worry, be comfortable, or I want that whatever the speaking you will give and everyone will enjoy, even learn a lot of things from you. Okay. So our task 1, we are going to talk about the introductory pattern. I'll ask few different kind of the questions or I want that you reply in a better way. Yes, Or sure. it takes 2 band score, means task 1 contains 2 band score, or I hope that you would get out 2 out of 2, or it can be 1.5 out of 2 or anything else. So let's talk about our first question named weekend. My first question means, what do you do on your weekends? Okay, well, I'm busy in my days, but on weekend I spend time with my family because I don't have much time to spend, because a family is really important in our life. So I think spending time on weekends is really good. Okay. Do you plan your weekend? No, I don't think we planned our weekend. And if I'm talking about myself, then I never plan my weekend. I usually do things by my own. Like sometime I visit on my friend home as well as watching some movies, and it's not planned. Do you have your own pet at your home? Well, I don't have any pet because I'm scared of them. Okay. In future, would you like to have a pet? No, actually my mother doesn't allow me to take a pet at my home because I really scared of him. Okay, that's okay. Of pet, no issues. Do you love to purchase shoes for yourself? Yes, I purchase so many shoes from different brands, as well as it's depend upon comfortable as well as branded shoes as well as design too. Okay. Do you love to wear branded shoes or normal? Well, it's depend upon situation. If I want to do jogging, then I
purchase only comfortable shoes. If I'm going to somewhere like a party and all, then I can prefer to branded shoes. What kind of the shoes do you love? Means formal or sports? Well, formal shoes I like to wear and I feel so comfortable when I wear it. Okay. Do you use application in mobile phone? Well, yes, I use so many applications in my mobile phone. Well, Pinterest is my one of my favorite app because I find so many things like designing, dresses, makeup, and so many things that I can see, and sometimes it creates my knowledge too. Okay. Do you love flowers and what is your favorite flower? Well, my favorite flower is lily, and I like to see so many flowers, and I like to give other person too. Okay. May I know about what do you do to relax yourself? Well, when I want to relax myself, then I take small nap, and sometimes I listen music too. Okay. Do you prefer singing? No, I don't sing because I'm not a good singer, but I like to listen music. Okay. How often do you watch TV? Well, honestly speaking, I don't have much time to watch TV, but yes, on weekend I like to watch TV. Okay. What's your favorite channel? Well, my favorite channel is Punjabi channels are my favorite because I like to watch Punjabi movies. Who's your favorite singer? Well, my favorite singer is Shreya Ghoshal. She is really melodious singer and I like to listen her songs. Do you follow fashion? Yes, definitely. I like to follow fashion because I'm from a fashion department. Then I really like to follow fashion and sometimes I make fashion by my own. Do you prefer to decorate your room? Yes, I decorate my room with lights, flowers, and so many things. And now there are candles too that decorate my room. Do you prefer to watch sky at night? Yes, I like to watch sky at night because it's give me the peace when I want to relax. Then I can see sky and it's really so beautiful at night. Do you love to count the stars? Yes, I like to count the stars. Sometime I was free and I try to count the stars, but it is impossible to count all the stars. So these are the question I asked from you. Means this is the end of section 1. Okay. Task 1, this is the end. Means everyone, I just want to let you know about this. Examiner would ask only one or two kinds of the question, but I try to ask various questions because I just want to do a practice, or I want to come to know even it takes 2 band score task 1, or I'll not give a band score because that I do want you people judge it and you people give the band score. So this is the end of our task 1. So this is time of our task 2. I'll give her one cue card and it would take 1 minute to prepare, and after that she'll speak continually 2 minutes. So my cue card here is describe a person that you like to spend time with. Means एक ऐसा person जिसके साथ आप time spend करना चाहते हो, और bullet point है who is he or she, or second one how you know this person, then what do you usually do together, or at last how you feel and what you share time, means why you love to spend time with him or her. So you have 1 minute and kindly prepare this. Here is your pencil. Your time starts now. और एवरीवन, आई जस्ट वांट टू टेल यू एवरीवन दैट के जो एग्जामिनर आपको एक एग्जाम पेपर देता है ना, तो वो आपकी हेल्प के लिए देता है, और आपने करना क्या होता है कि उसके ऊपर ना छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने होते हैं, और डेफिनेटली जब आप स्पीकिंग करते हो ना तो आप उन पॉइंट्स को देख सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे. मतलब ये नहीं है, बहुत सारे बच्चों को ना एक चीज से डराया जाता है कि पेपर की तरफ नहीं देखना, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट करके बोलना है. हाँ, आई कॉन्टेक्ट करो, ठीक है. जब आपको लगे ना कि पॉइंट मिस हो रहा है तो प्लीज मैं आपको बोलता हूं कि आप क्यू का जहां पे लिखा है ना क्यू कार्ड, उसको देखिए और आराम से उसको प्रिपेयर कीजिए. अभी 45 सेकंड हो गया आपका. ओके हो. सो प्लीज वो आपकी चॉइस है, 1 मिनट लेना है, 45 सेकंड्स लेने हैं. हाँ, अगर थोड़ा बहुत कम टाइम भी लेते हो तो एग्जामिनर इंप्रेस भी तो होता है. बस ये बात याद रखना, जो चीज बुक में दी होती है ना क्यू कार्ड में, सेम नहीं बोलनी. क्यू कार्ड अपनी मर्जी से बोलना और बहुत अच्छे तरीके से. सो आई होप दैट कि आप बहुत अच्छा बोलोगे. सो प्लीज स्टार्ट योर क्यू कार्ड राइट नाउ. Okay, well, I'm extrovert person. I have so many friends in my life, offline and online too. But today I would like to talk about my best friend, and she's Rashika. Actually, if I'm talking about how we met, it's just like an accident when I met her, and she's so good
Actually, in everything she is so good. She's lots of filled with creativity. And if I'm talking about her hobbies, she like to do dance, and we make some videos together. And now it's becoming trend to upload some videos on Instagram, and we upload too, and we get some compliment too. And she's really good person. And I think in our life there are lots of person they demotivate us, but she's only one person who motivate me that I can do everything. She is really good person, and she is always be with me. She always help me in my every work whenever we go on market and shopping, and we do all lots of things. And the main reason why I spend time with her, actually she is down to earth person. And her nature is really so good. When I spend time with her, I feel like a peace, because I never find that type of person in my life. Actually, I want to a good friend in my life, but right now I have that type of friend in my life. So I think like everyone have that type of friend. And the main quality of my good friend is she is best in cooking. She cook a lot of food, and I learned so many things from her. Like, I don't know how to make a good food, and I make so many dishes for my family member. And I think this is a good time for me to spend time with her. And this is my good friend that I like to spend time with her. दैट्स रियली इम्प्रेसिव, आई रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस। और मेरे को ना दो मिस्टेक्स लगी, और एक जगह पे आपने बोला था शी कुक, वहाँ पे शी कुक्स आना था, और एक जगह पे आपने बोला था शी मोटिवेट, वहाँ पे मोटिवेट्स आना था। बस बात खत्म। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई रियली इम्प्रेस्ड। और डेफिनेटली आपने भी सुना होगा, और मैं चाहता हूँ कि कैसा लगा सब बताना ज़रूर, हम देखना चाहते हैं। मतलब मैं कमेंट्स रीड करूंगा, और डेफिनेटली आई रिप्लाई टू एवरीवन कि आपका क्या एक्सपीरियंस था। और हम चाहते हैं कि आपके लिए हम नई से नई और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लेके आए, ताकि आपको पता चले कि रियल एग्जाम में क्या होगा। और बात करते हैं, और दिस इज द एंड ऑफ टास्क 2, इट इज कॉल्ड अ क्यू कार्ड। और जब बारी आती है ना टास्क 3 की, तो टास्क 3 इज कॉल्ड अ फॉलो अप क्वेश्चन। मींस फॉलो अप क्वेश्चंस में क्या होता है, जो चीज आपको टास्क 2 में पूछी जाती है, द सेम रिलेटेड क्वेश्चन उसमें टास्क 3 में पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा लेंथी हमने आंसर्स देना होता है, नो इश्यूज फॉर दिस। सो लेट मी टॉक अबाउट द टास्क 3 नेम्ड फॉलो अप। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, why is family bonding necessary for happiness in life? Okay, well, family, as we all know, that family is really important in our life. If I'm talking about family, family is that like we never feel alone, and we share our happiness and our bad things to our family. And actually, family is like a support, and it's like a support for everyone. Like, if we have a good family, then we can do everything in our life, because if no one be with us on that time, our family be with us. Okay, that's okay. Answer was very good, but the repetition of family was a 6 time. एक क्वेश्चन च 6 टाइम फैमिली आया था, इन्हों ਆਪਾਂ repetition नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द सपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम द सपोर्ट फ्रॉम अ फैमिली मेंबर? Well, yes, it's a difference, because if I'm talking about my family members, then if the family members, if we take some help from family members, we don't have return something on it. If we take help from our friend, then we can give something. And I think it's really big difference, because our family is always be with us on our bad things, and they always support us on each and everything. So family is really important, and the support from family is really good for everyone. Okay, what are the values of family in your country? Well, if I'm talking about India, the value of family is like everyone respect their elders. And if anyone want to do some another work, and they want to start new business, they first of all they take permission from their elders. And it's really good thing, because our parents, our elders know that what is good and what is not good for us. So this is the end of section 3. सो एवरीवन, आज का स्पीकिंग यहाँ पे फिनिश होता है। मतलब क्या है कि हमने इंट्रोडक्शन भी पूछा, क्यू कार्ड भी पूछा, और डेफिनेटली फॉलो अप क्वेश्चंस भी पूछे। याद रखना, इंट्रोडक्शन के होते हैं 2 बैंड स्कोर, क्यू कार्ड के होते हैं 4 बैंड स्कोर, और फॉलो अप्स के होते हैं 3 बैंड स्कोर। मतलब ओवरऑल कितने हो गए, 9 बैंड स्कोर।
आज का स्पीकिंग आपको कैसा लगा, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताना। और दूसरी बात, मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका भी स्पीकिंग बहुत इंप्रूव हो, तो डाउनलोड कीजिए बेबी कोड एप्लीकेशन। और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो जस्ट ओनली 300 रुपीज का है। और जब आप यूज करोगे मेरा प्रोमो कोड रमन0007, जब आप इसको यूज करोगे तो ये रह जाएगा 250 रुपीज का। और आपको बदले में मिलने वाला क्या है, आपको मिलेंगे अनलिमिटेड स्पीकिंग टेस्ट। आप जितने मर्जी बार स्पीकिंग के टेस्ट दो, और एक एनवायरमेंट मिलेगा। जैसे मैंने इस बच्चे की स्पीकिंग ली है ना, तो डेफिनेटली आपको भी वो एनवायरमेंट मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि आईएल्स का स्पीकिंग कैसे होता है। आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी, आपको आपके बेस्ट आंसर्स पता चलेंगे, और डेफिनेटली आप अपनी स्पीकिंग को ट्रैक कर सकते हो कि किस डेट में मैं कैसी स्पीकिंग देता था, आज मेरी स्पीकिंग में क्या चेंज आया, पहले मैं कौन सी मिस्टेक्स करता था। मतलब हर एक चीज का आपको वहां पे रिकॉर्ड मिलने वाला है, और आप उस पर कर सकते हो कम्युनिकेशन। आप किसी से भी बात कर सकते हो फोन के ऊपर, आप इंग्लिश में टॉक कर सकते हो। और डेफिनेटली आईएल्स का जो स्पीकिंग पार्ट है वो विदाउट प्रैक्टिस कभी क्लियर नहीं होगा। और मैं दिल से रिकमेंड करता हूं कि आप अगर बेबी कोड के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो 100% आपका जो स्कोर है 5 से 7 होगा ही होगा। जैसे यहां पे आज आंचल की स्पीकिंग हुई है, और मैं चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट इस चेयर के ऊपर आप बैठे होगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन थैंक यू आंचल। सो थैंक यू माय टीम जिन्होंने आज शूट किया। सो एवरीवन, आई लव यू। सो अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो दिल से माफी, मगर जितना भी हमने बताया वो दिल से था। थैंक यू वेरी मच। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेबी कोड को कीजिए डाउनलोड, और यूज कीजिए मेरा प्रोमो कोड रमन0007।